नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएनए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मेटलर्जिकल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ मेटलर्जिकल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन of material is to judge its suitability and unsuitability for a particular service, strength and soundness, metallurgical composition. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ए बी एंड सी। फंक्शन ऑफ मेटलर्जिकल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल is to judge its suitability and unsuitability for particular service, strength and soundness and metallurgical composition. सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, which of the following metals appear silvery white on visual inspection? lead, magnesium, zinc या none of these? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। which of the following metal appear silvery white on visual inspection? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, which of the following metal does not produce ringing sound when it is hammered? एल्यूमिनियम, लीड, मैग्नीशियम या कॉपर? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लीड। Which of the following metal does not produce ringing sound when it is hammered? सही आंसर है ऑप्शन बी, लीड। नेक्स्ट है, a material subjected to dash exemplify dynamic load state, compression, tension, bending या impact? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, impact। a material subjected to impact exemplifies dynamic load state. Next है, if a material suffer permanent deformation due to application of stress or load, it is called elastic deformation, plastic deformation या rupture stress या ultimate stress? सही आंसर है ऑप्शन बी, plastic deformation। If a material suffer permanent deformation due to application of stress or load, it is called plastic deformation. Next दोस्तों, with the increasing load in any metal specimen, a point comes when the metal fractures. This is called the yield point, ultimate stress, रफ्चर स्ट्रेस या बोथ बी एंड सी? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस एंड रफ्चर स्ट्रेस। विथ द इंक्रीजिंग लोड इन एनी मेटल स्पेसिमेन, ए पॉइंट कम व्हेन द मेटल फ्रैक्चर्स। दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस एंड रफ्चर स्ट्रेस। नेक्स्ट है, metallography of a metal or alloy involves its microscopic examination. It does not give any idea about grain size, segregation, non-metallic inclusion या none of these? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, none of these। Metallography of a metal or alloy involves its microscopic examination. It does not give any idea about the ना ग्रेन साइज, ना सेग्रीगेशन, ना नानो मेटालिक इंक्लूजन। सही आंसर है नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ए मेटल और एन एलॉय गिव एन आइडिया अबाउट द डैश ट्रीटमेंट अंडरगोन बाय इट? थर्मल, मैकेनिकल या बोथ ए एंड बी या नेदर ए नॉर बी? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब थर्मल एंड मैकेनिकल ट्रीटमेंट। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ए मेटल और एन एलॉय गिव्स एन आइडिया अबाउट द थर्मल एंड मैकेनिकल ट्रीटमेंट अंडरगोन बाय इट। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ fracture
in a metal revealed the presence of slag particles and blowhole. It may be due to the dash of the metal. Faulty manufacture, incorrect pouring temperature या faulty heat treatment या none of these. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए faulty manufacture. Microscopic examination of fracture in a metal revealed the presence of slag particles and blowholes. It may be due to faulty manufacture of the metals. Next, hardness of a safety razor blade is best measured by the Wiener hardness test, Vickers diamond pyramid test, या शोर और रिबन हार्डनेस टेस्ट, या रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट. सही आंसर है ऑप्शन डी रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट. Hardness of a safety razor blade is best measured by the Rockwell superficial hardness test. Next, plastic deformation in metals is due to the presence of dislocation in crystal. This is a dash defect, point defect, surface defect, line defect या none of these. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी line defect. Plastic deformation in metal is due to the presence of dislocation in crystal. This is a point line defect. Next, the defect in the crystalline structure of material affect its properties. Which of the following is not a structure sensitive properties of a material? Ductility, tensile strength, डेंसिटी या ईल स्ट्रेंथ. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डेंसिटी. द डिफेक्ट इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल affect its properties. Which of the following is not a structure sensitive property of a material? सही आंसर है ऑप्शन सी डेंसिटी. नेक्स्ट है most common reason for fatigue failure of material is due to electrochemical corrosion, application of repeated stress या its less elasticity या its high yield point. सही आंसर है ऑप्शन बी application of repeated stress. Most common reason for fatigue failure of material is due to application of repeated stress. नेक्स्ट है दोस्तों डैश कैन बी डिटेक्टेड बाय विजुअल इंस्पेक्शन. इंटरनल श्रिंकेज इन कास्टिंग, ब्लो होल ऑन कास्टिंग सरफेस या सब सरफेस डिफेक्ट या नन ऑफ दिस. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्लो होल ऑन कास्टिंग सरफेस. डैश कैन बी डिटेक्टेड बाय विजुअल इंस्पेक्शन. सही आंसर है ऑप्शन बी ब्लो होल ऑन कास्टिंग सरफेस. Next, what type of stress is applied to the specimen in the creep test? Biaxial tensile stress, uniaxial compressive stress या uniaxial tensile stress या alternating stress. सही आंसर है ऑप्शन सी uniaxial tensile stress. What type of stress is applied to the specimen in the creep test? Uniaxial tensile stress. Next, the depth of indentation in Brinell hardness test should not be greater than dash percent. 1%, 10%, 25% या 40%. सही आंसर है ऑप्शन बी 10%. The depth of indentation in Brinell hardness test should not be greater than 10% of the thickness of test piece. Next, Vickers diamond pyramid method of hardness testing gives the most accurate result for polished and hardened steel surface या rough forgings या heterogeneous material like grey cast iron या D all A B and C. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए polished and hardened
steel surface. Vickers diamond pyramid method of hardness testing gives the most accurate result for polished and hardness steel surface. Next, in Vinell hardness test, load applied in 3000 kg for testing both the hard as well soft material, but the diameter of the hardened indenting steel ball are different. The diameter of steel ball used for hardness testing of soft, for example copper and aluminium, and hard, that is steel material, are respectively dash mm. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 5 and 10 mm. In Vinell hardness test, load applied is 3000 kg for testing both the hard as well soft materials, but the diameter of the hardened indenting steel ball are different. The diameter of steel ball used for hardness testing of soft, that is copper and aluminium, and hard, that is steel material, are respectively 5 and 10 mm. Next दोस्तों, ability of a material to withstand vibratory stress by converting mechanical energy into heat is called its endurance limit, damping capacity या toughness या brittleness. सही आंसर है ऑप्शन बी damping capacity. Ability of a material to withstand vibratory stress by converting mechanical energy into heat is called its damping capacity. Next, which is the heaviest, that is highest specific gravity metal out of the following? Iron, lead, nickel या silver? सही आंसर है ऑप्शन बी lead. Which is the heaviest, that is highest specific gravity metal out of the following? सही आंसर है lead. Next, the resistance of a material to fatigue failure is called the damping capacity, endurance limit, toughness या malleability? सही आंसर है ऑप्शन बी endurance limit. The resistance of a material to fatigue failure is called the endurance limit. Next, pick out the correct statement. Young's modulus of elasticity is dimensionless. The ability of a material to absorb energy when deformed elastically is called its resilience. Yeah, factor of safety is expressed as the ratio of working strength to ultimate strength of a material. Yeah, tensile strength of a steel wire of cross sectional area less than 1 mm square cannot be determined. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी. Pick out the correct statement. The ability of a material to absorb energy when deformed elastically is called its resilience. Next, which of the following is not a non-destructive test? Penetrating liquid test, Magniflush method, ultrasonic testing या क्रीप टेस्ट? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी क्रीप टेस्ट. Which of the following is not a non-destructive test? सही आंसर है ऑप्शन डी क्रीप टेस्ट. नेक्स्ट है ultrasonic testing of a material uses ultrasonic waves for flow detection in material. It is similar to sound wave but is inaudible to human ear या of very low frequency या reflected back with distortion when transmitted into sound defect free materials या none of these? सही आंसर है ऑप्शन ए similar to sound wave but inaudible to human ear. Ultrasonic testing of material uses ultrasonic waves for flow detection in material. It is similar to sound wave
but but is inaudible to human ear. Next, why radiographs compared to X-ray radiographs are more usable for material inspection due to the fact that X-ray cannot penetrate all materials which are opaque to ordinary light waves. Production of X-ray is much costlier than that of Y-rays. X-ray unit above 300 kV are not portable. None of these. सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सरे यूनिट above 300 kV are not portable. Why radiographs compared to X-ray radiographs are more usable for material inspection due to the fact that the X-ray unit above 300 kV are not portable. Next, center of indentation in vinyl hardness test should not be less than dash time its diameter from the edge of the test piece. सही आंसर है ऑप्शन ए 2.5. Center of indentation in vinyl hardness test should not be less than 2.5 times its diameter from the edge of the test piece. Next है दोस्तों, microscopic examination of fracture in a metal revealed the presence of coarse grain. It may be due to the dash of the metal, faulty heat treatment, incorrect pouring temperature, या both A and B, या faulty manufacture. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, both A and B. Microscopic examination of fracture in a metal reveal the presence of coarse grains. It may be due to the faulty heat treatment and incorrect pouring temperature of the metal. Next, which of the following metal has the highest modulus of elasticity? Aluminium, iron, magnesium या tungsten. सही आंसर है ऑप्शन ए aluminium. Which of the following metal has the highest modulus of elasticity? सही आंसर है aluminium. Next, which is the lightest, that is lowest specific gravity metal out of the following? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक या टिन. सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम. व्हिच इज द लाइटेस्ट मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर है मैग्नीशियम. नेक्स्ट, द एज डिसलोकेशन एंड द स्क्रू डिसलोकेशन फाउंड इन मेटालिक क्रिस्टल इज ए डैश डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट या नन ऑफ दिस. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लाइन डिफेक्ट. द एज डिसलोकेशन एंड द स्क्रू डिसलोकेशन फाउंड इन मेटालिक क्रिस्टल इज ए लाइन डिफेक्ट. नेक्स्ट, स्टैकिंग फॉल्ट इन मेटालिक क्रिस्टल occurs if a plane of atoms in stacked out of sequence in a closed packet structure. It is a dash defect, line defect, point defect, surface defect या none of these. सही आंसर है ऑप्शन सी surface defect. Stacking fault in metallic crystal occurs if a plane of atom is stacked out of sequence in a closed packet structure. It is a surface defect. नेक्स्ट है दोस्तों, in magnetic particle testing method for detection of flaws or subcrack, ferrospheric oxide particle are used. या non-magnetic particle can only be tested. या magnetic particle flag at the edge of the defect free specimen या none of these. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फेरोसोफेरिक ऑक्साइड पार्टिकल आर यूज्ड. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.